Hi everyone. Welcome back in the lecture series of sampling distribution and statistical inference. And this will be the lecture number 4. And in this lecture, we will see strong law of large numbers and central limit theorem. And we will do some examples as well. So let's start from the example. The example is like this. The question that's let x1, x2 up to xn be a sequence of independent and identically distributed, that's IID, random variables. Each follows uniform 0, 1 for a geometric mean that is x1, x2 up to xn raised power 1 upon n. Show that Gn will converge to C in probability for some C. Then find this C. And what is the value of e raised power minus 1 into C? See, the question is, we have a sequence of IID random variables. What is IID random variable? That's IID random variable which is independent and identically distributed. This IID means that we have a random sequence of random variables, that's x1, x2, x3 up to xn. So these random variables are independent, and the distribution of x1, the distribution of x2, the distribution of x3 up to distribution of xn will remain the same, that's uniform distribution, which is identically. So distribution of x1, x2, x3, x4, xn will be the same, that's uniform 0, 1. Then for a geometric mean, that's this x1 up to xn raised power 1 upon n, or you can write this as g is also equal to this 1 upon, or simply n x1 x2 up to xn. You can write gn also equal to this, right? And this is also equal to x1 x2 to xn raised power 1 upon n, right? So we need to find that C where Gn is converging to C in probability. So C, as you know, x follows uniform 0, 1. Then we will find a distribution of minus ln x, that is y. So what is the PDF of this? This is f of x is equal to 1 when x is between 0 and 1. Then we need to find the distribution of this. As you know from the transformation, this will be the exponential 1. So we will see here also how this is exponential 1. See, whenever we do transformation, this is the old function and this will be our new function. F of y will be our new function, that's f of y is equal to f of x, that's old function multiply Jacobian. And this will be the f of y, that will be the distribution of this. So from here, what's x?
x is equal to e raised to power minus y, right? So now find dx, that is equal to e to the power minus y minus e to the power minus y dy. So this will be our dx upon dy is equal to e to the power minus y. When we take the mod of this will become e to the power minus y only. So f of y will be e to the power minus y, and the limit of y will be 0 to infinity. How this will be, the limit will be 0 to infinity? See, when x takes values from this, when x takes value 0, so minus log 0, and when we see minus log 0 is 0, and log 1, that's not defined, so y is from 0 to infinity. From this, y is from 0 to infinity. So I can write this as x follows uniform 0, 1 minus ln x follow exponential 1, exponential 1. And also from transformation, I can write this minus 2 summation ln x will follow chi square 2n. But remember this only, right? Remember this only. What will be the expectation of this when y follows exponential 1? Expectation of x, as you know, that's mean, mu, that's 1, and variance of x will be 1 square, that's also 1, right? So this is the continuous distribution, and as you know, for exponential distribution, mean is mu and variance is mu square. As you know from the continuous distribution, that's exponential distribution, right? So expectation of then what is this expectation of y? So it means that 1 upon n summation yi will also converge to 1 in probability. As we see, whenever we find the expectation, so that is simply probability x bar minus mu is less than epsilon will tend to 1. So what is this? This is mu. So we say that x bar is converging to mu in probability. Similarly, we find that expectation of y is 1. So expectation of y is 1. So expectation of y bar is also 1. Right? So what's our GN? So we find these, and this is also equal to this, then expectation of y is 1. So Gn is equal to x1 up to xn 1 upon n. So what's log Gn? That's 1 upon n x1 log x1 plus 1 upon n log x2 up to so on. So this is 1 upon n summation I is equal to 1 to n log x high, and what is the value of this log x high is yi. Wait a minute. So see, if we take negative signs both sides, so we will get minus log Gn minus 1 upon n summation yi. Summation yi. So from this and minus log Gn is equal to, let's write this quantity as zi, right? So what is the expectation of this? That will be the expectation of this. So from this
or I can only say what's the expectation of this, that's 1 simply. So gn is equal to e raised power minus 1. So anti-log, taking anti-log. So gn is equal to e to the power minus 1. So we can say gn will converge to e to the power minus 1 in probability. So we find this c as e to the power minus 1 is equal to c, right? So value of e to the power minus 1 into e, that's equal to e to the power e divided by e, that's equal to 1. So value of e raised power this is equal to 1. So what I did in this question to simply हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमारे पास एक सीक्वेंस है जो यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, and then we have the geometric mean, that's this. तो हमें दिखाना है कि जो gn है, geometric mean है, वो कन्वर्ज करेगा किसी c पॉइंट पे in probability, right, which is not a random variable. आपको पता ही है convergence in probability में एक सीक्वेंस नॉन रैंडम वेरिएबल पे ही कन्वर्ज करता है, and then we need to find the value of this. तो हमने क्या किया, हमने gn को ऐसे लिख लिया, right? then see, as you know, देखो डायरेक्टली तो हम इसको कर नहीं सकते, एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली लगा नहीं सकते, इस पे हम डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक तो मल्टीप्लाई में है और पावर में 1/n है, तो इसको कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, सी आपको पता है जब x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1, देन माइनस लॉग x किसको फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1 को। तो आपको पता ही है ट्रांसफॉर्मेशन से, ये तो मैंने करके भी दिखाया। तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, 1। सी इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, y का, y क्या है हमारे पास, y ये है ना हमारे पास, तो माइनस लॉग x का एक्सपेक्टेशन 1 आया, तो मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ y 1 आया यहाँ से, तो मतलब x बार भी 1 होगा ना, 1/n समेशन yi क्या है हमारे पास, देखो yi हमारे पास है माइनस लॉग xi, दिस इज माय yi माइनस लॉग xi। सो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से yi क्या है, माइनस लॉग xi और समेशन n, और ये भी n कैंसिल आउट, यहाँ से भी ये आप लिख सकते हो कि इसका एक्सपेक्टेशन 1 आएगा, और xi दैट्स gn, xi मतलब प्रोडक्ट ऑफ xi x1 x2 अप टू xn, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट विल बी दी, वो कन्वर्ज करेगा e रेज पावर माइनस 1 पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, gn इज इक्वल x1 अप टू xn 1 रेज पावर 1/n। सो log gn ले लिया, तो यहाँ से 1/n, एंड आपको पता ही है log माइनस log xi किसको फॉलो, एक्सपोनेंशियल 1 को। तो मैंने क्या किया, ये तो यही क्वांटिटी है ना, समेशन के साथ yi, ये तो मेरा yi था ना, मतलब माइनस साइन के साथ, माइनस log xi क्या है मेरा, दैट्स yi। तो ठीक है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन तो 1 है, तो मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, जब इसका एक्सपेक्टेशन 1 है तो gn को हम एंटी यहाँ से log को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, या सिंपली आप एक काम कर सकते हो, इस पे e डाल सकते हो, इस पे भी e डाल सकते हो, मतलब यहाँ से माइनस लॉग gn इज इक्वल टू 1, ऑपरेट e ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, e माइनस लॉग gn, या माइनस यहाँ ले लो तो ये आएगा e रेज़ पावर माइनस 1, e और log 1 होता है तो ये आएगा gn इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस 1, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, सिंपली इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टफनेस नहीं थी। नाउ सी, strong law of large numbers। सी इन दिस strong law of large numbers आपको याद क्या रखना है, चीजें तो बहुत कुछ है लेकिन याद क्या रखना है, तो सी आपको याद क्या रखना है, सीक्वेंस xn n is greater or equal to 1 of random variables
is said to obey the strong law of large numbers if Sn minus expectation of Sn divided by n will converge to 0 almost surely as n tending to infinity, right? So whenever this happens, Sn minus expectation of Sn divided by n is 0, is tending to 0 in almost sure convergence, then operating limit on this quantity, the quantity which is inside in the brackets, that is probability लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में तो हम लिमिट क्वांटिटी की ही लेते हैं ना, मतलब जो अंदर रहता है, और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी के बाहर लिमिट ले लेते हैं, या कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। ये तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस हमें बताता है कि अगर ऐसा रहा है प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ये तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है। तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स किस पे बेस है? ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे। किस पे? ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे। Sn क्या है यहाँ पे? Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन xi, मतलब इनका सम, रैंडम वेरिएबल्स का सम, मतलब मीन। Also we can write this as Sn divided by n minus expectation of Sn divided by n. This is equal to, what is this? This is xn bar. Let's suppose this is xn bar. तो ये क्या होगा? इसका मीन क्या होगा? mu n बाहर, या mu n ले लो, mu n. This will converge almost surely to 0 as n tending to infinity. Or if we talk about the notation, this is equal to this, almost surely, and probability limit n tending to infinity xn bar minus mu n is equal to 0, and the probability will be 1. So this is a strong law of large numbers with the help of almost sure convergence. हमने ये देखा, but necessary and sufficient condition क्या होगी इसकी? Necessary and sufficient condition, देखो आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सेमेस्टर एग्जाम में तो आएगा ही आएगा स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में। तो वहां पे आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, देन यू विल गेट द आंसर। ये सब तो आप नहीं लगाओगे ना, ये तो डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स की, बट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यही है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के exists, number 1, this is my necessary condition, and जो sufficient condition है that is summation sigma k square upon k square is less than infinity, that is finite. This is my sufficient condition. ये दो चीजें आपको निकालनी। अगर ये लेस देन इंफिनिटी आए तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स होल्ड कर रहा है, ये आपको निकालना है क्वेश्चंस में। नाउ सी क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे। स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी एक्स के is equal to plus minus 2k, that is equal to 2 minus 2k plus 1, and probability xk is equal to 0
प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 minus 2k. Show that strong law of large numbers holds good. ये हमें दिखाना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सी पहले हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, दैट इज -2, दिस -2k, 2 -2k -1 प्लस 2k, 2 -2k plus 1 plus 0 into 1 minus 2 minus 2k. See, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 into something is 0, so expectation of x k is equal to 0, right? Now expectation of x k square क्या होगा? इसका स्क्वायर, this is 2 2k 2 minus 2k plus 2 2k 2 minus 2k plus 1 और 0 स्क्वायर का 0 होगा। ये कितना होगा? See, this is 2k minus 1. So this will be equal to 2k minus 2k minus 1 plus 2k minus 2k plus 1. तो मैंने ये बेसिस तो सेम है ना, पावर्स गेट्स एडेड, तो मैंने सबको ऐड कर लिया। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2k कैंसिल आउट, ये 2k कैंसिल आउट, -1 plus 1 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 0, so 2 raised power 0 is equal to 1. So expectation of xk square is equal to 1. So what's sigma k square? That is expectation of xk square. This is 1 minus expectation of xk square. That's equal to 1 minus 0. This is equal to 1. Clear? So now जो हमारे पास sufficient condition थी, that is now calculating summation sigma k square upon k square. K is equal to 1 to n. And this is equal to sigma k square कितना है? 1 है. This is equal to 1 upon k square. K is equal to 1 upon n. So this will be equal to ये सम आपको याद रखना है। See, ये आप इंटीग्रल्स में सम याद रखते हो, सम ऑफ द सीरीज या रियल एनालिसिस में आप ये सम ऑफ द सीरीज याद रख सकते हो कि समेशन 1 by k square is pi square upon 6, which is less than infinity. So strong law of large numbers holds for the above sequence. यही आपको करना है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर में आपको यही करना है। Now central limit theorem. Central limit theorem. See, इसमें डायरेक्टली किसका यूज है? लिमिट का यूज है। इसका डायरेक्टली किसका यूज है? लिमिट का यूज है। एंड पहले मैं आपको बता दूं कि अगर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर को, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल 0,1 को। दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो ये इसको फॉलो करेगा, नंबर 1। नंबर 2, x बार विल फॉलो नॉर्मल म्यू कमा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, ठीक है? तो यहां से क्या होगा? x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन n विल आल्सो फॉलो नॉर्मल 0,1। ये दो चीजें आपको अभी याद रखनी है। एंड अभी मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे आऊंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सो व्हाट्स CDF ऑफ नॉर्मल? That is minus infinity to x 1 upon under root 2 pi e to the power minus t square upon 2 dt. So this is equal to f of x, x of normal, that is phi of x. ठीक है, ठीक है। And phi of x plus phi of minus x is always equal to 1. So मतलब यहाँ से क्या होगा? Phi of x is equal to 1 minus phi of minus x. ठीक है, हो गया ये भी हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या बचा है इसमें?
हाँ, phi of minus infinity is equal to 0, phi of infinity is equal to 1, phi of 0 is equal to 1 by 2, phi of 1 is equal to 0.841 something. ये वैल्यूज आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको याद करनी ही करनी है। ये वैल्यूज हर जगह आएगी, ये वैल्यूज हर जगह आएगी, ये वैल्यूज। नाउ why CLT? Why CLT? It was given by Laplace in 1812. See, इससे हमारे पास कैलकुलेशंस कितनी इजी होती है वो आप अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखोगे। And this is applicable when n is large. Central limit theorem is applicable when n is large. And we will use CLT when original distribution doesn't matter. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंट्रल लिमिट लगा के हम अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन मीन एंड वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा। When this condition holds, weak law of large numbers also hold in this case, CLT में। So it simply says that जो normal distribution है हमारे पास, that's the limiting distribution to the sum of the independent random variables with finite variance and the number of random variables gets independent। जब भी हम n को बढ़ाएंगे, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। CLT में हम यही करते हैं कि CLT में हम यही करते हैं कि जब भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के बाद वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, जब भी हम n को बढ़ाएंगे, when n gets large, जो भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है ना, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनका, वो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो सी if xi is equal to 1 to up to n be independent random variables such that expectation of xi should exist, that's mu I, variance of xi is equal to sigma I square, and Sn is equal to summation xi. So expectation of Sn is equal to n mu, variance of Sn is equal to n sigma square. ठीक है, then when talking about finite mean and finite variance, then we get probability Sn minus expectation of Sn divided by n. If this is greater or equal to epsilon, so this will tend to 0. Probability Sn minus expectation of Sn divided by n is less than or equal to epsilon. This will tend to 1 as n tends to infinity. So this is the one statement. This statement shows that it follows weak law of large numbers, right? It follows weak law of large numbers, as well as I say when x follows normal mu comma sigma square, x bar is equal to 1 upon n summation xi. Then what's expectation of x bar? That's mu. What's variance of x bar? That is sigma square upon n. What will be the expectation of Sn? That is n mu. Variance of Sn? That's n sigma square. Then Zn, that is equal to x bar minus mu upon under root of sigma square upon n will follow normal 0 comma 1. So we say Zn will converge in distribution to Z.
right? Zn, what is Zn? Zn is this. Zn is x bar minus mu upon sigma square upon n. This will follow normal 0, comma 1. This is my z. So Zn is simply this. So Zn will follow to z standard normal variate in distribution. Whenever we talk about the CLT, think about convergence in distribution. Convergence in distribution, right? Convergence in distribution. So now let's suppose we have the sequence of random variables, that's gx1 up to xn. Then subtract the mean of this g of x1 up to xn divided by the distribution will be कोई भी distribution होगा यहाँ पे, ठीक है? So variance of g of x1 up to xn. So this will always follow normal 0, comma 1 distribution, right? Normal 0, comma 1 distribution. So points to remember that if x1, x2 up to xn are IID with mean, mu and variance sigma square, sigma I square mu I, right? Then Sn is equal to x1 plus x2 plus x3 plus xn. Then for the values of a and b should exist, then limit n tending to infinity probability of Sn minus expectation of Sn divided by variance of Sn with under root, that is standard deviation, less than or equal to b, and this will be equal to c. This is my z. So I can write this as limit n tending to infinity probability a z b. So this is always equal to f of x b minus f of x a, and this is also equal to phi of b minus phi of a, right? So sum of random variables, that's Sn, then we subtract this Sn by expectation of Sn divided by standard deviation of a. We try to make it this standard normal variate within these limits a and b, right? So this is equal to, whenever you are asked about to find the probability with the use of central limit theorem, you have to find this. When n tends to infinity. Remember, when n tends to infinity. CLT is used when n tending to infinity, when n is large. In some cases, or we generally take n, if n is greater or equal to 30, then we can use CLT or large n generally, right? So again, note from De Moivre Laplace theorem that its CLT follows that standard binomial variate tends to standard normal variate when n tending to infinity. See how? When x follows binomial n comma p, what's the expectation of x? And that's np. What's variance of x? That's np cube. So
x minus expectation of x divided by variance of x का root. This will follow normal 0, 1. You try to make the standard normal variate, that is z, follows normal 0, 1. So z is this expectation of x when x follows binomial distribution. So we will see the applications of CLD, then we will find how binomial variate tends to standard normal variate. We will see, and Poisson also. Whatever will be the distribution, try to make this standard normal variate. Then that standard normal variate will follow standard normal variate, right? Applications of CLT. First one, x1, x2 up to xn are IID binomial R, P, and Sn is equal to summation xi. Then what's expectation of Sn? That is summation expectation of summation xi. So expectation of Sn is equal to, this is summation expectation of xi, which is n, into what's expectation of this? This is Rp. So this is simply nRp. What is variance of Sn? That is n into Rp 1 minus p, that's npq. So this is equal to nRp 1 minus p. Then limit n tending to infinity, probability between this Sn minus nRp divided by under root of nRp 1 minus p is less or equal to b, that's equal to phi of b minus phi of a, and p is between 0 and 1. See, the limits of this z will never be strictly increasing or strictly decreasing, or strictly, we say strictly inequality. Always you find that there is equality sign as well. There will never be the inequality, strictly inequality. Strictly inequality means whenever you have z greater than a, z greater than b. In this case, CLT is not useful. You have considered that the limit, the equality plus inequality, that's inequality, simply that's inequality, right? So this is, there will be always the inequality like this, that is non-strictly inequality, right? मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, मतलब नॉन इक्वालिटी। ऐसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए, ये हमेशा होना चाहिए कि x is greater or equal to होना चाहिए, less or equal to b होना चाहिए, but not x is greater than a, x is less than b. इक्वालिटी साथ में होना चाहिए। दूसरा, if yn is distributed as Poisson lambda, then limit n tending to infinity, probability a, which is yn minus expectation of yn divided by variance of yn, is less or equal to b, and this is equal to phi of b minus phi of a. ये था आपका applications of CLT. Now last topic आज का है, that's Cramers theorem. Cramers theorem. Simply Cramers theorem हमें क्या कहता है? Cramers theorem हमें कहता है let xn and yn be sequence of random variables
such that xn will converge to x in distribution and yn will converge to some constant in convergence in probability, and c is not equal to 0 and c is constant, then xn upon yn will converge to x by c in distribution, that's L or D, when c is not equal to 0. So this is the theorem. This is only the theorem. इतना ही statement है इसका. So question देखते हैं अब CLT पे. Let x1 x2 up to xn be IID Poisson variate with parameter lambda. Use CLT to find probability that Sn is between this lambda is equal to 2 and n is equal to 75. Now see, probability 120 minus what's expectation of Sn, that is n lambda. Now how we can find this L lambda, that is n is 75 into 2, that's 150, and as you know variance of Sn will also be equal to 150. Why? Because in case of Poisson, mean and variance are equal. Upon under root of 150, as then Sn 160 minus 150 upon under root of 150. So this is equal to probability. ये आप सॉल्व करोगे, ये आएगा -2.45 लेस और इक्वल टू Sn लेस और इक्वल टू 0.82, and this will be equal to phi of 0.82 minus phi of minus 2.45. So this is equal to phi of 0.82 minus 1 minus phi of 2.45, क्योंकि इसका मैंने बता दिया ना, phi of minus x plus phi of x is equal to 1. So ये आएगा phi of 0.82 minus plus phi of 2.45 minus 1. इसकी वैल्यूज आपको गिवन होगी, वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आप अपना जो सॉल्यूशन है वो आप ले सकते हो. ठीक है, so this is the answer. Right, now another question is value of limit, that's limit n tending to infinity summation k is equal to 0 to n 2n upon n 1 by 4n. इसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ CLT. देखो ऐसे तो लग रहा है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ होगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. दिस इज समथिंग कि हमसे सॉल्व होगा ही नहीं. बट सी व्हेनेवर वी अप्लाई द CLT, देखो पहले लिमिट्स को देखो. लिमिट कहां से है? 0 to n. लिख लो लिमिट, ठीक है, लिख लो लिमिट. देन जब आपने लिमिट लिखी किसकी? x की, लेट्स सपोज दिस इज x, लिमिट लिख ली. देन अब इसको एनालाइज करो. ये पीडीएफ होगा किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन का. सी अगर मैं लिखूंगा 2n upon n 1 by 2 n 1 by 2 2n minus n, ऐसे लिख सकता हूं मैं. ऐसे लिख सकता हूं मैं. ठीक है, दिस इज 2n n 1 by 2n n 1 by 2 2n minus n. ठीक है,
तो see यहाँ से पता चल रहा है कि x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 2n, 1/2. So what's expectation of x? This is 2n into 1/2, that's n. What's variance of x? This is 2n into 1/2 into 1/2. So this is n by 2. तो यहाँ पे पुट करो ये वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी 0 minus expectation of x, that is n, divided by variance of this, that is under root of n by 2, which is less than z. इसको z बना दो, x minus expectation of x divided by variance of x का this z. So this is n minus n upon under root n by 2. Clear? So this is equal to probability minus n by under root n. This is minus 2n divided by under root n. This is z. This is n minus n, that is 0. So ये होगा बराबर phi of 0 minus phi of minus 2n upon under root n. So this is phi of 0 कितना होता है 1/2 minus, और ये phi of infinity minus infinity है, that is 0. So answer is 1/2. समझ गए? phi of infinity, क्योंकि देखो n 1 minus 1/2, this is n 1/2. So ये तो infinity जाएगा ना, मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको न्यूमरेटर में इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो ये माइनस से ऊपर चला जाएगा, ये माइनस से ऊपर, अगर ये n 1/2 है तो ये 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो ये सिंपली ये बन के आ गया. नाउ सी another question is दो क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर इसको हम एंड करते हैं इस लेक्चर को. क्वेश्चन, let x n is greater or equal to 1 be a sequence of IID normal random variables with mean mu and variance 1, then limit n tending to infinity, probability 1 upon n, summation xi is greater than 4.0006. So solution देखो क्या होगा इसका. देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus limit n tending to infinity, probability 1 by n, summation xi is less than 4.0006. क्या क्या मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया इसका, ठीक है. सो यहां से देखो x फॉलो नॉर्मल 0 का म्यू कामा 1, ये तो x बार है ना. सो 1 minus limit n tending to infinity, probability x bar is less than 4.0006. अब हम क्या करेंगे इसमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होगा, n म्यू. एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होगा, n म्यू. तो सी 1 minus limit n tending to infinity, probability of z is less than 4.0006 minus mu divided by n म्यू नहीं म्यू, और वेरिएंस कितना है 1 upon under root n. So limit 1 minus limit n tending to infinity, probability z is less than under root n into 4.0006 minus mu. So ये क्या होगा 1 minus limit n tending to infinity, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये कहाँ जा रहा है n into something, जब मैं n tending to infinity तो ये infinity पे जाएगा. So this is phi of infinity, and phi of infinity क्या होता है 1 होता है. So 1 minus 1, the probability will be, that the limit will be 0, limit of this probability will be 0. कैसे किया मैंने ये, simply see, देखो z is less than under root n, तो मतलब जब अंडर रूट n है और n टेंड टू इन्फिनिटी है तो ये कहाँ जाएगा, ये टर्म कहाँ जाएगी इन्फिनिटी. तो मतलब ये क्या है, तो सी डेफ है ना, दैट इज फाई ऑफ इन्फिनिटी. 1 minus phi of infinity is 1, so this is 1 minus 1 is 0. Now last question is, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, let xn be a sequence of IID random variables with PDF
f of x is equal to 1 0, and this is between otherwise. Value of limit, that's a limit n tending to infinity, probability minus 1 upon n, summation ln xi, I is equal to 1 to n, is less or equal to 1 plus 1 upon अंडर रूट n is, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला, सेम टू सेम एक्स फॉलो यूनिफॉर्म, तो ये किसको फॉलो करेगा, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो से कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, x follows uniform 0, 1, ठीक है। सो माइनस लॉन्ग xi will follow expectation of exponential 1, sorry, exponential 1, and 1 upon n summation yi क्या है, that's y bar, and y1 क्या है, yi क्या है, माइनस ln xi, यही तो है, ये y bar। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar क्या है, दिस इज 1, वेरिएंस ऑफ y bar क्या है, 1 अपॉन रूट n, क्योंकि इसका वेरिएंस भी 1 है ना, वेरिएंस ऑफ y bar क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि y bar किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 1 को। समझो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये तो y bar है ना, तो मतलब yi क्या है ये, तो इसको मैंने समेशन yi डिवाइड बाय n, दैट्स y bar, ये तो y bar ही है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar क्या होगा, 1 है, क्योंकि y किसको फॉलो कर रहा है, एक्सपोनेंशियल 1 को। सो y bar भी किसको फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1 को। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y bar इज 1, वेरिएंस ऑफ y bar इज 1 बाय रूट n, क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होता है y bar का। ठीक है, अब आपको ये निकाल के देना है। सी अगर मैं लिखूंगा 1 upon n summation yi, expectation of 1 upon n into summation yi, so 1 upon n into n expectation of yi, this and this go, expectation of yi कितना है, वो तो ये exponential 1 है, that's 1। now variance of y bar, that is 1 upon n square summation variance of yi, so this is 1 upon n square into n variance of yi, this n and this n cancel out, 1 upon n और इसका 1 है, मतलब सिग्मा स्क्वायर है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा स्क्वायर 1 है तो 1 बाई n। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y बार कितना आया, 1, वेरिएंस ऑफ y बार कितना आया, 1 अपॉन n। सो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ये, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी इसकी, ठीक है ना, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी इसकी। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y bar is less or equal to 1 plus 1 by root n. So this is probability y bar minus 1 upon under root n, which is less than 1 plus 1 upon under root n minus 1 upon under root n. यही तो है। सो ये किसके बराबर होगा, see this will be equal to probability z is less than equal to ये 1 और ये 1 cancel out, ये और ये cancel out, phi of this will be the simply phi of 1, that is 0.841 something, ये इसकी probability है। See in next lecture, remember in next lecture we will see questions only on the base of topic Chebyshev, convergence in probability, convergence in distribution, almost sure, weak law of large numbers, weak law of large numbers, CLD. We will see the questions on these topics. मतलब ज्यादातर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करोगे, हर एक एग्जाम में ये कॉमन है और यही सिलेबस है, चाहे आप गेट का उठा लो, चाहे आप CSI नेट का उठा लो, चाहे आप ISS का उठा लो, चाहे आप CUT PG का उठा लो, चाहे आप IT जैम का उठा लो,
सब में यही टॉपिक्स है। इनके बेस पे हम जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट Z टेस्ट, T टेस्ट, chi स्क्वायर टेस्ट, F टेस्ट, मतलब ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहाँ तो मैं chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करूंगा, मतलब chi स्क्वायर T एंड F डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि उनमें भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पार्ट है, उसको भी तो समझना है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, बट आई एम श्योर कि मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट लेक्चर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा।